Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the different questions which are being asked already in the HSCSIT sponsored district level science quiz competition, which was held on 30th September 2022 at Pandit NRS Government College, Rohtak. And the purpose of that video is to spread the knowledge among the non-participants and also for the participants to send them back in the playback memory ताकि उनको अपनी पीछे की जो memory है वो दोबारा से दिख जाए. Plus, in today's lecture we will give you a brief introduction about the rules and regulation of that science quiz competition. This district level science quiz competition is sponsored by Haryana State Council for Science, Innovation and Technology, Government of Haryana. As per the letter number 2100 dated 23rd of August 2022, the HSCSIT Panchkula give the responsibility to some of the colleges to conduct the district level science quiz competition at the district level and give the complete report to the DST department so that the next zonal level science quiz competition may be conducted in the month of the October and November. So it is the compulsory for all the colleges who have taken the responsibility to conduct the district level science quiz competition that they complete their task latest by 21st October 2022. But the Pandit NRS Government College Rohtak complete their task on the 30th September 2022. There are different rules for the district level science quiz competition. This district level science quiz competition is to be conducted at different levels, the district level followed by zonal level, finally at the state level. And their purpose is to create the scientific temper, to create the deep sense of curiosity, to create the keenness to get to the root of the problem, willingness to change on being convinced, making learning of the science through fun and the entertainment. So in that stream, the Pandit NRS Government College Rohtak take the responsibility to conduct that district level science quiz competition. At the district level science quiz competition, there are different rules for conducting the science quiz, and that rule that are for the district level science quiz competition, that will be the same at the zonal level, and that will also be same for the state level science quiz. By taking the responsibility for conduction of the district level science quiz competition, the Pandit NRS Government College Rohtak, complete their task in a very efficient manner by creating a Google form. The link is given here. All the colleges of the district level fill the Google form, fill the Google registration form, and send their entries well before the time. And the Pandit NRS Government College Rohtak simultaneously been in contact with all the colleges so that there will be the negligent errors in their Google registration form. If there is something error like one student roll number is missing, or their roll number or the phone number is missing, or the email is missing, because all are the requirement by the HSCSIT Panchkula department, because the winner 5 top teams entry with full detail is to be sent by the Pandit NRS Government College Rohtak to the DST Panchkula, so that there will be no error
in their name, father name, college name, class roll number. So all these entry will be filled only by the concerned department, concerned colleges, concerned teacher, concerned student. So there will be no fault in the part of the पंडित NRS गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक, ताकि पंडित NRS गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक के पार्ट के ऊपर कोई भी एरर ना रहे कि उनकी तरफ से किसी बच्चे की, किसी टीचर इंचार्ज की रोल नंबर के बेस के ऊपर, ईमेल के बेस के ऊपर, फोन नंबर के बेस के ऊपर कोई एरर रह जाए। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमने गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू ही सभी कॉलेजेस से एंट्री ली और साइमल्टेनियसली उसको चेक किया, ताकि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें भी काफी टाइम होता क्या है कि रजिस्ट्रेशन सेम डे में जब कॉलेजेस आते हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही 11 से 12 ओ क्लॉक तक का टाइम हो जाता है। लेकिन जो पंडित NRS गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक है, उन्होंने इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को गूगल फॉर्म के थ्रू लेते हुए अपनी जो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस था उसको अप टू 9:15 ही कंप्लीट ऑलमोस्ट कर दिया था। उसके बाद 9:40 के लगभग हमने टाइम 9:30 का दिया था, लेकिन हमने थोड़ा जैसे टीम को बिठाया उसमें 9:40 तक का हमारा टाइम हो गया था। तो 9:40 पे हमने एग्जैक्ट स्क्रीनिंग राउंड को स्टार्ट किया और 10:40 पे हमने स्क्रीनिंग राउंड को फिनिश कर दिया था और 11 AM के ऊपर हमने रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया था कि दीज आर दी टॉप 8 टीम्स फॉर द ओरल डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस क्विज कंपटीशन। तो ये हमने इस टाइप से स्क्रीन तैयार की हमारे जो पार्टिसिपेंट टीम्स थी उनके लिए। हमने गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बनाया। उसके बाद दीज आर द डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस, ये डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस थे जिनको हमने इनवाइट किया था जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इन डिफरेंट कॉलेजेस से 22 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि देयर इज द रूल फ्रॉम द DST डिपार्टमेंट के एक कॉलेज के अंदर से मैक्सिमम 2 ही टीम आ सकती हैं। एक टीम के अंदर 3 स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो टोटल जो 17 टीम्स थी उनमें से टोटल 17 जो कॉलेजेस थे उन कॉलेजेस के अंदर से 22 टीम्स आई, हर टीम के अंदर 3 स्टूडेंट, तो टोटल 66 स्टूडेंट हो गए। और साथ जो टीचर्स आए दीज आर 14 इन नंबर, तो टोटल 80 पार्टिसिपेंट्स बन गए स्टूडेंट्स और टीचर्स को मिला के। सो दैट इज द ओवरऑल व्यू अबाउट द डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस क्विज कंपटीशन के टोटल स्टूडेंट्स 66 थे 22 टीम्स के अंदर और 14 टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया। गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू सारी एंट्रीज को लिया गया था। रजिस्ट्रेशन कमेटी ने शार्प 9 AM पे ही सभी को इनवाइट किया और सभी कॉलेजेस 9 ओ क्लॉक से पहले ही 9 AM से पहले ही कॉलेज के अंदर हमारे पहुंच चुके थे और विद इन 15 मिनट्स ही सभी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो एंट्री थी, जो हमारी जो लिस्ट थी वो पहले से ही तैयार थी, क्योंकि गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू ही हमने सभी का रजिस्ट्रेशन करवाया था। सिर्फ उन टीम्स को आके, टीम इंचार्ज स्टूडेंट को आके अपने रजिस्ट्रेशन लिस्ट के ऊपर जस्ट उन्होंने अपने साइन किए। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट हुआ था स्क्रीनिंग टेस्ट से। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन थे एज पर द रूल, and these 100 questions are equally distributed from the physics, chemistry, mathematics, biology, botany, zoology and the EVS studies। तो इसीलिए हमने क्या किया, 20 क्वेश्चन फिजिक्स से लिए, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथमेटिक्स, 20 बायोलॉजी और 20 हमने मिक्सअप क्वेश्चंस कुछ लिए थे। और उनके बीच में कंपटीशन हुआ 22 टीम्स के बीच में, MCQ के बेसिस के ऊपर टेस्ट लिया गया और यहाँ पे 1 क्वेश्चन के 1 मार्क्स थे और नेगेटिव मार्किंग भी थी आपके स्क्रीनिंग राउंड में, जिसमें 0.25 मार्क्स 1/4 मार्क्स डिडक्ट किया गया फॉर द रॉन्ग आंसर। तो ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, इसके बाद नेक्स्ट जितने भी जो टॉप 8 टीम्स थी उनको फिर नेक्स्ट राउंड के लिए शामिल किया गया। जो नेक्स्ट राउंड हुए वो 4 सब राउंड थे। फर्स्ट इज द क्वेश्चन राउंड जिसके अंदर 4 सब राउंड थे, बी एक्टिविटी राउंड जिसमें 2 सब राउंड थे, विजुअल राउंड जिसमें 2 सब राउंड, लास्ट वन इज द रैपिड फायर राउंड। जो फर्स्ट और सेकंड राउंड था ए एंड बी, ए इज द क्वेश्चन राउंड, बी इज द एक्टिविटी राउंड, वो 30 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिला, 30 सेकंड। और जो सी राउंड था उसके लिए 20 सेकंड्स का टाइम था। और जो ए बी सी जो 3 राउंड्स थे, इसमें हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आंसर देने के लिए अगर वो उसका आंसर ठीक है तो 4 मार्क्स मिलेंगे और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग एंड द 2 बोनस मार्क्स विल बी गिवन जस्ट टू द नेक्स्ट टीम फॉर गिविंग द करेक्ट रेस्पॉन्स।
और जो टाइम लिमिट थी डी राउंड की, दैट इज द रैपिड फायर राउंड, दैट इज द 60 क्वेश्चन। और रैपिड फायर राउंड के अंदर द क्विज मास्टर विल आस्क एज मेनी एज क्वेश्चन वन बाय वन फॉर 1 मिनट फॉर ईच ऑफ द टीम। इनसे एक टीम को 60 सेकंड का टाइम मिला, क्विज मास्टर लगातार क्वेश्चन पूछता है उसमें, और जो टीम होती है उनको लगातार उनके जवाब देने होते हैं। अगर वो जवाब किसी क्वेश्चन का उनको नहीं आता तो दे जस्ट से पास पास पास, जिसका आंसर आता है उसका जवाब देंगे। तो इस टाइप से जितने ठीक क्वेश्चन है उनके आंसर को नोट कर लिया जाता है, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क इसमें मिलता है। किसी बच्चे ने 8 क्वेश्चन के मार्क्स ठीक बता क्वेश्चन के जवाब ठीक दे दिए तो उसको 8 मार्क्स मिल जाते हैं, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से ये डिफरेंट राउंड्स थे। उसके बाद जो ये कंपटीशन हुआ अमंग द 8 टीम्स, उनमें से जो बेस्ट 5 टीम्स निकली, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टीम्स आई उनको भी सर्टिफिकेट मिले। अप टू द 8 टीम्स सभी को, यानी और भी जो टीम्स थी सभी को सर्टिफिकेट्स दिए गए। लेकिन सिर्फ जो 5 टॉप टीम्स थी उनके नाम फिर हमने डीएसटी डिपार्टमेंट पंचकुला को सेंड कर दिए गए, ताकि वो फर्दर जोनल लेवल साइंस क्विज कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऐसे ही डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस क्विज कंपटीशन करवाया जा रहा है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट की तरफ से पंडित एनआरएस गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक ने तो 30 सितंबर 2022 को अपना वर्क कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से जो 5 टीम आएंगी, डिफरेंट जोन्स आर क्रिएटेड, डिफरेंट जोन्स बने। डिफरेंट जोन्स जो डीएसटी ने बनाए, दैट इज द अंबाला जोन, नंबर 2 हिसार जोन, रोहतक जोन, गुरुग्राम जोन। जो रोहतक जोन है उसके अंदर करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और झज्जर, हर डिस्ट्रिक्ट से 5 टीम्स होंगी, मींस 5 5 जा 25। ये जो 5 5 जा 25 जो टीम्स होंगी, दे विल फाइट अगेन इन द जोनल लेवल साइंस क्विज कंपटीशन। सिमिलरली नंबर 1 जो अंबाला जोन है उसमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, इन डिस्ट्रिक्ट से, हर डिस्ट्रिक्ट से 5 5 टाइम मींस 5 5 जा 25 वो फर्दर फाइट करेंगे आपस में। जोनल लेवल का जो कंपटीशन अंबाला में होगा। हिसार जोन के अंदर जींद, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद, हिसार, यहाँ से 5 5 टीम हर डिस्ट्रिक्ट से आके वो फाइट करेंगी जोनल लेवल के ऊपर। गुरुग्राम से फरीदाबाद, पलवल, नुहू, गुरुग्राम, रिवारी और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो 5 टॉप टीम्स थी वो फाइट करेंगी जोनल लेवल के ऊपर। ऐसे ही जोनल लेवल के ऊपर बिल्कुल सेम उसी टाइप से डिफरेंट राउंड्स होंगे जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया, कि क्वेश्चन, एक्टिविटी, विजुअल, रैपिड फायर राउंड, वही सेम टाइम सारा सब कुछ सेम रहेगा। फिर इसी टाइप से जो जोनल लेवल के ऊपर जो कंपटीशन होगा, वहां से जो बेस्ट 3 टीम्स हैं, बेस्ट 3 टीम्स फ्रॉम ईच जोन, जैसे अभी हमने आपको बताया 4 जोन है, तो हर जोन से बेस्ट 3 टीम्स, तो 4 जोन से 4 3 जा 12 जो टीम्स होंगी वो सिलेक्ट की जाएंगी फॉर द स्टेट लेवल, फॉर द स्टेट लेवल। तो जो 12 टीम्स होंगी उनके बीच उसी टाइप से वही डिफरेंट राउंड्स होंगे। सबसे पहले तो स्क्रीनिंग राउंड, उसके बाद स्क्रीनिंग राउंड से बेस्ट 8 टीम्स आएंगी, जो 8 टीम होंगी उनके बीच होगा फिर क्वेश्चन राउंड, एक्टिविटी, विजुअल, रैपिड फायर राउंड, उसी टाइप से। और उसके बाद मेन चीज यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि क्यों ईगरनेस रहती है सभी स्टूडेंट्स के बीच कि हम जो साइंस क्विज कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करें और जीतें। वो इसलिए क्योंकि जोनल लेवल के ऊपर फर्स्ट प्राइज 40,000 रुपीज, सेकंड प्राइज 30,000 रुपीज एंड थर्ड प्राइज इज 20,000 रुपीज। While at the state level, the first prize is of 1 lakh and a trophy for the first prize winning college. Second prize is of 80,000, third prize is of 60,000। जो 50% जो अमाउंट होती है प्राइज की स्टेट लेवल के ऊपर, दैट इज विल बी गिवन टू द कंसर्न टीम, and the balance 50% prize money will be given to the college concerned for carrying out the different science promotional activities, but that amount may not be utilized for the purchase of the equipments and the apparatus. The college will utilize this amount within the 3 months time and send the report along with the utilization certificate to the office. डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोई भी कैश प्राइज नहीं होता। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज नो कैश प्राइज विल बी गिवन टू द विनर्स, ओनली द सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू द विनर्स। द प्राइज टू द जोनल एंड द स्टेट लेवल विनर्स टीम विल बी गिवन ड्यूरिंग द स्टेट लेवल फंक्शन। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जैसे अब की बार हमारे कॉलेज में हुआ, तो वहां के जो इंचार्ज जो स्टूडेंट्स थे
उन्होंने ये गुजारिश की थी कि हम एक चीज आगे भेजें और बताएं कि जैसे जोनल लेवल के ऊपर फर्स्ट प्राइज 40, 30, 20 होता है, सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी प्राइज ज्यादा ना करके, जैसे यहाँ पे लोवेस्ट प्राइज 40 है, तो वहां पे ऐसा किया जा सकता है कि फर्स्ट प्राइज 20, सेकंड प्राइज 10,000, थर्ड प्राइज 5,000 हो जाए। तो मीन्स ये थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये टीम की गुजारिश थी, उनके टीम इंचार्जेस की गुजारिश थी, अगर ऐसा हो जाए तो बच्चों के अंदर थोड़ा उनको बूस्टअप मिलता है उस चीज के लिए। तो हमने उनको कहा था कि ये आपकी जो मैसेज है ये हम आगे डीएसटी तक पहुंचा देंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि व्हाई द स्टूडेंट्स हैव सो मच ईगरनेस फॉर द साइंस क्विज, सो ड्यू टू दैट ग्रेट प्राइज, ग्रेट प्राइज ही नहीं उसके साथ साथ बच्चों की नॉलेज भी यहाँ पे इंक्रीज होती है। और जो ये कंपटीशन, इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी कि दैट कंपटीशन इज ओपन टू ऑल द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स स्टडिंग इन एनी ऑफ द कॉलेज इन द हरियाणा स्टेट, वेदर इट इज द गवर्नमेंट कॉलेज और द एडेड कॉलेज और द प्राइवेट कॉलेज, कोई भी कॉलेज हो। और जो मीडियम है इस क्विज कंपटीशन का, वो जो रिटर्न एज वेल एज द एक्टिविटीज, क्वेश्चन राउंड, विजुअल, रैपिड फायर, दैट इज द इन दैट विल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसीलिए हमने जितने भी क्वेश्चंस जो करवाए, जो टाइप किए, दैट इज इन द इंग्लिश लैंग्वेज। However, the student can reply the question in the Hindi or the English as per their convenience. अब रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंडित एनआरएस गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक ने जो डिफरेंट राउंड्स करवाए, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ताकि बच्चे भी उस चीज के लिए अवेयर हो जाएं, तो वो कंप्लीट डिटेल अब हम आपको यहाँ पे देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए जो और भी कॉलेजेस हैं किस टाइप से के क्वेश्चन आने होते हैं, ताकि उनको कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए उस चीज की। इसलिए हम वो सारी चीजें अब आपके सामने शेयर करेंगे। जो सबसे पहला राउंड हमने करवाया, दैट इज द स्क्रीनिंग राउंड। वो आपका स्क्रीनिंग राउंड था। स्क्रीनिंग जो राउंड था उसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन के अंदर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी राउंड और ईवीएस राउंड, यानी ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। मींस मिक्सिंग राउंड के जो क्वेश्चंस पूछे गए, अब उनकी सारी जो डिटेल थी, किस टाइप से क्वेश्चन थे, वो सारी चीजें अब हम आपको बताएंगे। तो जो डिफरेंट क्वेश्चंस स्क्रीनिंग राउंड के दौरान बच्चों से जो पूछे गए, वो आपके साथ अब हम शेयर करेंगे वेरी फास्ट फास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन? द आंसर इज यूरिएज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्बोक्सिलिक एसिड? अमंग दीज, आप सभी स्टूडेंट ध्यान से सभी ऑप्शन को देखते जाना, क्योंकि हम जब ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, हम साथ के साथ उसके जवाब आपको बताते चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्बोक्सिलिक एसिड? क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द कार्बोलिक एसिड, जो कि फिनोल का दूसरा नाम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट is involved in the atom bomb? Chemical reaction, nuclear fusion, physical. We all know in the atom bomb the reaction is nuclear fission. So the answer is none of them. Next question number 4. The catalytic converter are generally made from, वो ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक वो एक दूसरे के ये सिनोनियम है, तो इसलिए आंसर इज बोथ ऑफ देम। विच प्रोडक्ट और या प्रोडक्ट्स विद पंजेंट स्मेल is or are formed when glycerol is heated with anhydrous zinc chloride? The answer is vinyl aldehyde or the acrolein, क्योंकि ये भी एक दूसरे के ही नाम है। Both are correct, so both of them. Which makes transparent cups visible to our eyes? Which makes transparent cups visible to our eyes? That is the refraction. Which statement is correct about the C14 in the human body? C14 is more in the living person and C14 is less in the dead person. तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है। The next one is the question number 8. Which kind of metal are generally extracted by the electrolysis? Alkali metal or the alkaline? Both of them. जो reactive metals होते हैं, they are generally been extracted by the electrolysis. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच गैस लिबरेटेड व्हेन मार्बल रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो जब निकले तो CO2 गैस इवॉल्व होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्लोरीन, हाइड्रोजन, बोथ ऑफ देम था, सो आंसर इज नन ऑफ देम। जो भी आंसर थे उसको हमने रेड कलर से यहाँ पे शो कर दिया है, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 10, ए रेन कोट इज मेड ऑफ पोलीक्लोरोइथेन, पोलीविनाइल क्लोराइड, बोथ ऑफ देम, क्योंकि पोलीक्लोरोइथीन और पोलीविनाइल क्लोराइड ये एक ही नाम है, दोनों एक ही चीज है, सो बोथ ऑफ देम। Which element is added to the natural rubber to make it less sticky in the hot weather and less hard in the cold weather? That is a sulfur. That is a vulcanization process.
हम सभी ये पढ़ चुके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव नियरर टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? When the electron come near to the nucleus, the attraction increases, energy releases, एनर्जी क्या हो जाती है उसकी, रिलीज हो जाती, और ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है उसकी। तो इसीलिए क्या होगा, जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स नियर टू द न्यूक्लियस, देयर एनर्जी डिक्रीजेस। तो आप बेटा यहाँ पे गलती से मेरे से रेड लिखा गया, आज जैसे मैंने इसको अभी दोबारा से जब किया था, तो आंसर इज एनर्जी डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम कब होती है, व्हेन इट इज प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस, और ज्यादा कब होती है, व्हेन इट इज प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो देयर आंसर विल बी ए। तो इसका आंसर यहाँ पे ए होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें, इसको देखो हमने यहीं पे आपके सामने देखो करेक्ट कर दिया है। देयर आंसर विल बी ए। तो A will be the answer. Question number 13, which chemical causes the Minamata disease? That is the mercury. Which of the following has no neutron? That is the protium H11, क्योंकि उसमें atomic number 1, mass number 1, तो 1 minus 1 is 0, so the neutron is 0. What is the measure of performance of the petrol in the internal combustion engine? That is the octane number. और जो आपके डीजल के लिए होता है, that is the cetane number. The purity of the solid compound can be determined by checking its melting point के बेसिस के ऊपर हम उसकी प्योरिटी को चेक कर लेते हैं. The oxidation number of the carbon in CH2O is, that is the 0. आप कार्बन को x मान के जब निकालेंगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का +1, तो 2 है तो +2, और ऑक्सीजन का -2, सो आंसर इज 0. Which metal has the less density than the water? That is the sodium. Sodium की जो डेंसिटी होती है वाटर से कम होती है. Which mineral, क्वेश्चन नंबर 19, which mineral is often used as an abrasive? That is the corundum. एक कार्बोरंडम होता है, that is, और दूसरा कोरंडम होता है, तो that दोनों के अंदर डिफरेंस होता है. क्वेश्चन नंबर 20, which drug is present in the tobacco? That is the nicotine. That is the nicotine. कार्बोरंडम SiC होता है, और जो कोरंडम होता है, दैट इज द Al2O3. तो ये आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इज द फिजिक्स सेक्शन. विच स्टेट, क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पर्सन who were born with the eyesight and later went blind? Blind person do indeed dream in the visual images. जो पहले ब्लाइंड नहीं था, बाद में ब्लाइंड हुआ, तो वो अपने विजुअल इमेजेस उसके अंदर रहती हैं, ब्रेन के अंदर. क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन ए बीम ऑफ white rays is dispersed by prism, which color will be refracted to a largest extent? That is the violet color. Which fuel produces the maximum heat per gram burnt? That is the hydrogen. आप जानते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात आजकल हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 24, when does the value of the energy becomes 0 for an electron? जो एनर्जी है, देखो इलेक्ट्रॉन की जीरो कब होती है, इट इज एज्यूम्ड दैट, ये एक एजम्पशन होती है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो व्हेन इट इज प्रेजेंट एट द इंफिनिटी, व्हेन इट इज प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि जैसे ही वो ज्यादा नजदीक आता है देयर एनर्जी बिकम्स नेगेटिव. तो ये बेसिक स्टेटमेंट है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव व्हेन इट अप्रोचेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. Next question, number 25. A petrol engine used in the mixed petrol and the air in a certain ratio for the combustion is called as carburetor. Question number 26. Which of the following is a dimensional constant? तो आप क्या कहेंगे, that is the gravitational constant. What will happen to the frequency when the tension of the string increases? Its vibration will increase. Question number 28, which one of the following groups have the quantities that do not have the same dimension? That is the force and the impulse. आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. Question number 29, the dimension of the Planck's constant are same to that of the angular momentum, जिसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं. एंगुलर मोमेंटम, P मोमेंटम होता है, P is equal to mv, एंगुलर मोमेंटम that is capital L, that is the mvr. Question number 30, how is the sound produced when we speak? By the vibration of the vocal cords. जो हमारे थ्रोट के अंदर वोकल कॉर्ड होते हैं, उनके अंदर वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. द लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव. हाउ द इको इज प्रोड्यूस्ड? बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस साउंड. जैसे पहाड़ों के अंदर हम जाए, हमारी आवाज दोबारा गूंजती है, उसे इकोज कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 33, what is the reciprocal of the impedance of an electric current? That is the admittance. Question number 34, when milk is churned, जब मिल्क को हम यानी ऐसे हिलाते हैं, the cream get separated due to the centrifugal force. The efficiency of the full wave rectifier is 80%. The holes are present in the valence band. Question number 37, following set of the forces act on the body, in which case the resultant cannot be zero? That is the option number D, 10, 20, 40 Newton होगा तब. Question number 38, which of the following is used in designing the atomizers? That is the Archimedes principle. Question number 39, a person feel weightless
inside an artificial satellite because the force of attraction of the Earth is zero at that place. Question number 40, a rear view mirror for driving a vehicle is convex. Question number 41, now the biology section. The somatic reproduction is found in the potato. A unisexual flower is mecha. Question number 43, what change occur in the RBC of the man at the high altitude? That is the number increases. Question number 44, what is known as suicidal bags of the cell? That is the lysosomes. Question number 45, which is the monocarpic plant which shows gregarious flowering once in 48 years? That is the bamboo. Question number 46, hydroponics means plant growth in liquid medium. Hydro means water. So in the liquid medium. Question number 47, the saliva help in the digestion of the starch. Question number 48, which parent's chromosome is used for the sex determination test? That is the father. Question number 49, which lipid is most abundant in cell membrane? That is the phospholipid, जिसे आप phospholipid bilayer भी कहते हैं. Question number 50, which plant hormone stimulates the synthesis of the alpha amylase? That is the gibberellin. Question number 51, which process of cellular respiration makes direct use of the oxygen? That is the electron transport chain. Question number 52, in which form the birds excrete nitrogen? That is the uric acid. That is very important question. Question number 53, which act as the shock absorber to cushion the tibia and the femur? That is the cartilage. Question number 54, which fat derivative synthesize all the hormones of adrenal cortex? That is the cholesterol. Question number 55, corpus luteum is a part of testis. Question number 56, which amino acid is metabolized by the brain? That is the glutamic acid. Question number 57, loss of hair from the head of young humans is called as the alopecia. Question number 58, Central Rice Research Institute is situated in New Delhi. Question number 59, in which of the following respiration in absence of the oxygen 2 takes place? That is in the yeast. Question number 60, which organ does the work of blood bank in the body? That is the spleen. Now the mathematics section. In steady motion, the streak lines coincide with both of them, means the streamline and the path line. Question number 62, if the speed of the fluid is same everywhere, then streamlines are circle, hyperbola, means answer will be the straight line. Question number 63, the normal velocity of boundary surface is constant. Question number 64, according to the equation of continuity, when water falls, its speed decreases while its cross-section area decreases. Question number 65, if the density of the fluid is not constant, it is said to be, answer is compressible. Question number 66, mean, mode, median are called as the measure of central tendency. Question number 67, the probability of a man hitting a target is 1/4. How many times must be fired so that probability of hitting the target at least once is greater than 2/3? Answer is 4. Question number 68, if the two events are independent, then they must be exclusive. B option, C option. Answer is none of them. Who is considered as the father of mathematics? That is the Pythagoras. Question number 70, the 4 prime numbers are arranged in the ascending order. The product of first 3 is 385. The last 3 is 1001. The largest prime number is, answer is 13. Question number 71, which branch of mathematics uses symbol to represent unknown quantities? Answer is algebra. With which of the mathematics is Euclid chiefly associated? That is the geometry. Question number 73, the angle of triangle are in the ratio of 1:2:3. The greatest angle will be 90 degree. Question number 74, which least number should be added to 2600 to make it a perfect square? The answer is 1. Question number 75, the equation of the normal to the curve y is equal to sin x at 0, 0 is. Question number 76, which shape are honey bee combs? इनकी shape कैसी होती है? That is the hexagons. Question number 77, which of the following invented algebra? That is the Bhaskar. Question number 78, all natural numbers and 0 are called as the whole number. Question number 79, how many vertices are present in a cube? The answer is none of them. Yani 4, 6, 9, these are the options. The answer is none of them, because the cube होता है उसके अंदर जो corners होते हैं, these are 80 number.
Question number 80. An object is thrown into the air. After a while, it falls back to the earth. The flight path of the object traces what shape? वो straight भी नहीं होगा, circular, any of them. The answer is none of them. Now the mixed questions. What is the flat image that can be easily displayed in 3D called the hologram? Question number 82. In the barotropic fluid, the body force is conservative. What does the prefix giga represent? A billion. Solve 3 plus 6 multiplied by ब्रैकेट में 5 plus 4 divided by 3 minus 7. बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करेंगे. आंसर इज 14. Question 85. How many years are there in a decade? Answer is 10. Malaria is caused due to the biting of the female Anopheles mosquito. Question number 87. Which of the following is an extinct animal species? Answer is dodo bird. Question number 88. What is the shape of the mathematical symbol lemuncate? So answer is infinity. What was the original name of for the number 0? That is the cipher. Question number 90. Apart from 1, I am a first positive number that is both a square and a cube. The answer is 64. Question number 91. What is the only prime number that is even? That is 2. Question number 92. What are the main colors of the photography? Red, blue, green. Question number 93. Submarines move in the water. Which of the following fuel is used in these engines? That is a steam. Question number 94. Which element radio isotope is used in the treatment of the skin disease? That is the phosphorus here. Question number 95. Which is the largest gland in the human body? That is a liver. The biogas used for cooking is a mixture of methane and carbon dioxide. Question number 97. By whom does milk turn sour? That is the bacteria. Question number 98. Which planet moves from east to west? That is the Venus. Question number 99. One of the factors responsible for destroying protective ozone layer of the stratosphere, that is the chlorofluorocarbons. Question number 100. The color of the cut apple turns brown after some time because it reacted with the air to form, that is the iron oxide is the answer. So these are the different questions which are being used during the screening round. After the completion of the screening round, the top 8 teams थी, they fight for the best 5 positions, so they become the part of the zonal level science quiz competition. तो जो टॉप 8 टीम्स थी उन्होंने फर्दर एंटर किया फाइटिंग के लिए जोनल लेवल में पहुंचने के लिए. तो जो ओरल साइंस क्विज कंपटीशन हुआ उसमें जैसे मैंने आपको पहले रूल्स बताए थे, देयर आर 4 मेन राउंड, दैट इज द क्वेश्चन राउंड, एक्टिविटी राउंड, विजुअल राउंड एंड लास्ट द रैपिड फायर राउंड. तो सबसे पहले हुआ था क्वेश्चन राउंड. तो जो क्वेश्चन राउंड था उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे. तो फर्स्ट वन इज द क्वेश्चन राउंड, और क्वेश्चन राउंड के अंदर 4 सब राउंड थे, दैट द फिजिक्स राउंड, केमिस्ट्री राउंड, मैथमेटिक्स राउंड, बायोलॉजी राउंड. तो इस टाइप से डिफरेंट 4 राउंड्स थे, 4 सब राउंड थे क्वेश्चन राउंड के अंदर. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फिजिक्स राउंड. क्वेश्चन राउंड के अंदर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज द पेंडुलम इज रेज्ड टू द हायर एल्टीट्यूड इट पीरियड्स इंक्रीजेस. Second question, in X-ray emission tubes, X-ray is emitted by the acceleration of, that answer is electron. देखो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर को हम शेयर कर रहे हैं. अगर हम ज्यादा डिटेल में आपको इन चीजों को समझाएंगे तो इट विल टेक मच मोर लॉन्गर टाइम. Now the next question, a cat is sitting in between the 2 plane mirrors. If the angle between the 2 plane mirror is of 30 degree, how many images of the cat will be appear? The answer is 11. Which gate is the universal logic gate? The answer is the NAND gate. Stern-Gerlach experiment proves the existence of the electronic spin. The process in which a region is made free from any electric field is known as the electrostatic shielding. When you go 150 kilometers above the surface of the earth, the color of the sky is, that answer is black. The zeroth law of the thermodynamics gives the concept of, answer is temperature. When bridge oscillators are based on, they are based on the positive feedback. What is the order of magnitude of the resistance of a dry human body? The answer is 10 raised to the power 4 ohm. Next round is the chemistry round. हमने 2 क्वेश्चन, जो हमारे जितने भी और बच्चे स्टूडेंट बैठे थे उनके लिए भी 2 क्वेश्चन थे, वो हमने आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे शो किए थे. टोटल 8 ही क्वेश्चन यूज किए गए थे बिकॉज देयर आर द टोटल 8 टीम्स. लेकिन अभी आपने 10 क्वेश्चन देखे थे, तो जो 2 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा रख रखे थे जितने भी हमारे और स्टूडेंट थे, स्पेक्टेटर्स थे, उनके लिए. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन राउंड.
The first question is the three isotherms 1, 2, 3 are at the temperature of T1, T2, T3 temperature respectively. The decreasing order of the temperature will be the T1 is greater than T2 is greater than T3. Next question, which reaction is the main source of the hydrogen bomb? The answer is nuclear fusion. Which compound on heating gives extra pure nitrogen gas? That may be the sodium or the barium nitride or the azide, that is the NaN3 or the BaN3 twice. Which radical is identified by the Brown ring test? The answer is the nitrate ion. Which process is used to obtain the pure ductile titanium? The answer is the Van Arkel-de Boer method. The hardness of the water is measured in terms of which of the chemical substance? The answer is the calcium carbonate. Name the linear polymer which is formed by condensation of the phenol and the formaldehyde. The answer is the Novolec because the bakelite is the 3D polymer. Which apparatus is generally used during the esterification reaction for the simultaneous removal of the side product, that is the water? The answer is the Dean-Stark apparatus. These are the two more questions for the spectators. Which has the more oxygen carrying capacity than the hemoglobin and it is present in the birds? That is the myoglobin. Which chromatographic technique can be used in both ascending and the descending pattern? That is the paper chromatography. Next will be the mathematics round. The mathematics round, the first one is the identify the following set. The value of S is given in the form, okay, whether it is the open or the closed set. The answer is the open set. The log A naught is minus infinity, then the value of A will be, the answer is the A is greater than 1. That is the value given integrated from 0 to infinity dx divided by 1 plus x square converges to, answer is pi by 2. The limit points for the sequence, that is 1 comma 1 by 2 comma 1 by 3 comma 1 by 4 and so on. So answer is the 0. Least upper bound of the set that is given here, provided f, that is a function, is a continuous function on R, the answer is 0. The derived set for the set A 0 1 and the 1 2 is, the answer is 0 comma 2. The multiplication of the two irrational number is, the answer is the any real number. Integration 0 to infinity x raised to the power n minus 1 e raised to the power minus x dx n greater than 0 represents, the answer is that particular gamma function. The open interval 0 1 is a infinite set that for the spectators. Next question is also for the spectators. For any complex number z sin z, answer may be any real number. Next will be the biology round. Oxygen liberated during the photosynthesis is coming from, answer is water. Which organelle is or are duplicated during the binary fission of the amoeba? The answer is the nucleus. In sickle cell anemia, the glutamic acid is replaced by, answer is the valine. Which cell organelle is involved in the apoptosis? The answer is the mitochondria. A couple has 6 daughters. What is the possibility of their having a girl next time? That is the 50%. Which type of organs are the wings of the butterfly and the birds? Answer is the analogous organs. Most intelligent mammals except humans are, answer is the dolphins. If an amoeba is placed in the salt water, its contractile vacuole will disappear. Name the new Ramsar site recently declared in the Haryana state in the year 2021. Answer is the Bhindavas Wildlife Sanctuary, which is situated in the Jhajjar district. Name an achiral amino acid, that is for the spectators. Last one for the also the spectators. Answer is the glycine. Next is the activity round. After the question round, which are these 4 sub rounds, the physics, chemistry, biology, and the mathematics round. The next one is the activity round, and there are 2 sub rounds for the activity, means activity round number 1, and after that the activity round number 2. So the first activity is identify the phenomena. Identify the phenomena. You can clearly see here the phenomena is the interference. The next one, identify the gas evolved. When you have an iron sulfide in that instrument and you add some amount of the acid here, name the gas evolved. The gas evolved is H2S gas and the apparatus is called as the Keeps apparatus. जो apparatus था, that is the Keeps apparatus, and gas evolved is the H2S gas. Next question. Identify the process.
given in the video. जो आवाज अभी आप सुन रहे हैं ये हमने म्यूट कर दी थी ड्यूरिंग द कंपटीशन. सो नेम द प्रोसेस शोइंग इन द वीडियो. वो तो जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए अभी हमने साउंड भी साथ चला दी थी. द आंसर इज द बैक्टीरियल कंजुगेशन. नेक्स्ट एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द लॉ ऑफ फिजिक्स इन दिस वीडियो. If you take the magnet of the same size, then the time increases. Identify the law of physics. The law is Lenz's law. Why color of the sugar changes white to black when the sulfuric acid is added to it? Due to the chairing of the sugar, because when the sugar reacts with the sulfuric acid, it results in the formation of the carbon along with the water. So due to the formation of that carbon, the color becomes black. Identify the next activity. Identify the biological technique shown in the video. The answer is CRISPR, clustered, regularly interspaced, short, palindromic repeats. Name the phenomena. द आंसर इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये जितने भी एक्टिविटी के क्वेश्चन है इसमें हमने तो सिर्फ यहाँ पे बेसिक आंसर लिख रखा है. बेसिक आंसर के साथ साथ स्टूडेंट को इसको एक्सप्लेन भी करना होता है एक्टिविटी को. व्हाट इज गोइंग इन दैट एक्टिविटी, व्हाई दैट इट बीन हैपन. तो फिनोमेना के साथ साथ स्टूडेंट एक्टिविटी को एक्सप्लेन भी करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर. When sodium react with water, it result in the formation of the hydrogen gas. That is an exothermic reaction. Identify the phenomena. These questions are for the spectators. The activity number 9 and the 10. Answer is the Leidenfrost effect. Which phenomena is shown in the given activity?
The answer is Tyndall effect because the scattering of light takes place. Next, activity round. What causes candle to oscillate? The answer is that is the shift in the position of the center of gravity. Next question, explain the below shown activity. That instrument is called as the Ostwald viscometer, which is used to determine the viscosity of the given solvent or the given mixture. Identify the biological technique shown in the video. Answer is endoscopy. Which phenomena is responsible for the rise of water in the bottle? The answer is the consumption of the oxygen, which reduces the pressure inside the bottle. Because for the burning process, oxygen is required. So the amount of the oxygen, concentration of the oxygen decreases inside the bottle, and thus the pressure reduces. And that's why the whole process takes place. Next question, explain the below shown activity. That is the mass spectrometry. Because in that video, it is shown that the ionization of the molecule takes place, ionization of the gaseous molecule takes place, fragmentation of the molecular ions, detection of the molecule and the fragment ion, all shown in that video. So that is the mass spectrometry. Name the phenomena. Answer is interference. Next, explain the below shown activity.
there is a free rotation between the carbon and carbon single bond, resulting in the formation of the staggered and the eclipse conformation, mainly the free rotation between the carbon and carbon single bond. What is the region behind the grip? The rice is packed tightly and has nowhere space to go when the stick is inserted. So the rice firmly squeezes the stick from all the sides and have a strong friction force arises which can support the entire weight of the bottle. Next question for the spectators. Why the water boils in the syringe? आपने देखा सिरिंज के एक एंड के ऊपर देखो जो निडल थी उसके एंड को हमने क्लोज कर रखा है और फिर जब हम पीछे से अब तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग अकर्स व्हाई द बॉइलिंग अकर्स व्हाई द वाटर बॉइल्स इन द सिरिंज decrease in the pressure and which results in the decrease in the boiling point of the water so the water boils. Why the can comes back? See the activity and tells why the can comes back. Answer is the kinetic energy of the can is transferred into the elastic potential energy, which is then transferred back into the kinetic energy and so on. So that's why the can comes back. Next is the visual round. Visual round also have the two sub round. The first visual round is the first question, name the endangered animal. The answer is the western hullock gibbon. Second question, the iron pillar of the Delhi located in the Qutub Minar is famous for its rust resistant property. It is made up of wrought iron. On which principle the phenomena shown in the picture is based on? The answer is the Pascal's law. Identify the function of the given graph. The answer is y is equal to e raised to the power x. Identify the experiment. That is a very simple experiment. That is called as the Miller-Urey experiment. The police uses what effect to monitor speed of the moving vehicles? The answer is Doppler effect. Which effect is continuously causes global warming in the given activity? Answer is the greenhouse effect. If red dot represents number of persons, then the number of the person which go to the restaurant only is P and the number of person going to the golf but not to the restaurant is Q. Find out P and Q. The answer is P is equal to 8 and Q is equal to 6. Next for the spectators, name the phenomena shown in the picture below. That is called as the Compton effect. Name the phenomena shown in the picture below. The answer is the polarization of the light. Now the visual round number 2. The first question is scientific name of the organism shown in the picture is that is the Asterias. Identify the type of the process in the given activity. The answer is the non-competitive inhibition or the allosteric inhibition. Identify the function. The answer is y is equal to 1 by x. Name the phenomena shown in the picture below. The answer is convection. Identify the organism. The answer is sand or the sea dollar. The adjoined figure represent. The answer is hypocycloid.
Identify the type of the unit cell. The answer is the FCC unit cell. Identify the type of the process in the given activity. The answer is the isobaric process. Next, for the spectators, this is the Darwin's observation in the Galapagos land. What did he observe? The answer is adaptation in the beaks according to their feeding habits. Identify the structure of the given biomolecule structure. Answer is the alpha helix secondary structure of the protein. Next will be the rapid fire round. After the completion of these three main rounds, the last one is the rapid fire round. In each of the rapid fire round, 60 seconds will be given to each of the team. There are the total 8 teams in the oral science quiz competition. So for the first team, the questions are, और यहाँ पे हमने स्लिप सिस्टम लिया था जो टोटल आपके जो जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से जो 8 हमारे सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, कोई एक सेट ऑफ क्वेश्चन किसी एक टीम के हिस्से में आया, दूसरा किसी दूसरी टीम के हिस्से में आ गया. तो द सेट 1, द फर्स्ट क्वेश्चन इज जो जल्दी जल्दी से 60 सेकंड के अंदर पूछे गए थे. द कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ, आंसर इज इलेक्ट्रॉन्स. 1 gram of the molecules of a gas at NTP occupies 22.4 liter. Which law consider this point? Answer is Avogadro's number. Absolute zero temperature is minus 273.150 degrees Celsius or the 0 Kelvin. The coordination number of the tetrahedral wide is, answer is 4. The number of the images formed by placing two parallel mirror, answer is infinite. The concept of an electrolyte in water was described by, answer is Arrhenius. The branch of the physics which deals with the motion of very small particle, answer is quantum mechanics. Pyrometer is used for measuring, answer is thermometer. A 2D geometric shape with constant radius of curvature is circle. The radius of curvature for the straight line is, answer is infinite. The shape of light reflector and the sound reflectors are, answer is parabola. All eigenvalues of a Hermitian matrix are, answer is real. Who is called as the father of taxonomy? Answer is the Carolus Linnaeus. The phycology is the study of the algae. Which is the largest non-protein? That is the titin. The chemical name of the aspartame is L-aspartyl L-phenylalanine methyl ester. That is the set number 4, set number 1 for any of the one team. Now the set number 2. Question number 1, the maximum catenation shown by, answer is carbon. N-type semiconductor is obtained by doping silicon with, answer is the pentavalent impurity. The formula of the half-life for the first order reaction is 0.693 divided by K. The process of heating of the rubber with 3 to 5% of sulfur is called as vulcanization. The binding energy per nucleon is maximum for, answer is iron. Question number 6, which instrument is used for measuring DC current? Answer is tangent galvanometer. Water drops are spherical because of, answer is surface tension. The color of the sky which appears to astronaut is, answer is black. Which theorem states that every square matrix satisfies its characteristic equation? Answer is Cayley-Hamilton theorem. Question number 10, the number of the lines drawn through a given point are, answer is infinite. The number of the lines drawn through two given point, answer is only 1. The term iota is equal to square root of -1 first introduced by, answer is Euler. Who discovered nucleus? Answer is Robert Brown. Who is the botanical name? What is the botanical name of the wheat? Answer is Triticum aestivum. Next question, which is smallest non-protein? Answer is TSHRF. Which protein deficiency causes 4D syndrome? Answer is niacin. So that is the set number 2 for another team. Next is the set number 3. Monomeric unit of the bakelite is phenol and formaldehyde. Denticity of the porphyrins, answer is 4. The lightest element in the periodic table is, answer is hydrogen. Which element is called as the Raghu element? Answer is hydrogen. Founding father of the Indian space program is, answer is Dr. Vikram A. Sarabhai. Next question, the name the state of matter found in the sun and the other stars, answer is plasma. Birthplace of the Albert Einstein is, answer is ULM, Germany. Isotons have same number of, answer is neutron. Condition for the vector function f to be constant vector is, answer is f multiplied by df by dt is equal to 0. What is the degree of 0 polynomial? Answer is not defined. Which mathematician won the Nobel Prize in the literature? Answer is Bertrand Russell in 1950. Which year is celebrated as the mathematical year? Answer is 2012. Name the causal organism of late blight of potato? Answer is Pythophora infestans. Clove is obtained from which part of the plant? Answer is flower bud. Pollination by the snails is known as malcophily.
What provides electron for the light reaction? Answer is water. That is the set number 3. Next, set number 4. First question. The formula of the heavy water is D2O. Dry ice is solid CO2. Temperature at which degree Celsius is equal to Fahrenheit? Answer is minus 34. Radioactive element in 4F series is answer promethium. What is the value of Ni voltage of germanium? Answer is 0.3 volt. Unit of noise pollution is answer decimal. SI unit of radioactivity is answer Becquerel. Commercial unit for measuring energy is answer kilowatt hour. Period of the function sine 7x modulus is answer pi by 7. Number of positive divisor of 180 is answer is 18. Determinants of the orthogonal matrix is answer is +1 or -1. Which geometrical shape has the least perimeter for the given area? Answer is circle. Which organism is responsible for converting milk into curd? Answer is lactobacillus. Deficiency of which element responsible for the dental caries? Answer is fluorine. Which organ is known as the sound box? Answer is larynx. Who proposed 5 classification in 1969? Answer is R.H. Whittaker. That is the set number 4. Next is the set number 5. First question. What is the full form of the LCD? Answer is liquid crystal display. Liquid crystals used for making skin temperature is cholesteric liquid crystal. At boiling point, vapor pressure of the liquid is equal to the answer is atmospheric pressure. Group having the coinage metal in the periodic table is answer is group 11. Weakest force in the nature is gravitational force. Color of the light depends on its answer is wavelength. For an irreversible process, the total entropy of an isolated process always answer is increases. Which of these have the more slope? Adiabatic process or the isothermal process? Answer is the adiabatic process. Father of the geometry is answer is Euclid. Mathematics day is celebrated on answer is 22nd December. Which medal is often described as the Nobel Prize for the mathematics? Answer is Field Medal. What are the diagonals of a skew Hermitian matrix? Answer either 0 or the purely imaginary. The vitamin which is very liable and easily destroyed during cooking as well as storage? Answer is vitamin C. During rainy season, wooden doors are difficult to open or close because of answer is imbibition. Question number 15. How many pairs of ribs are there in the human body? Answer is 12. Name the simplest amino acid. Answer is the glycine. That's the set number 5. Now the set number 6. First question. How many inputs and outputs does a full adder have? Answer is 3 inputs and 2 outputs. Who is the present director of the ISRO? Answer is Shri S. Somanath. Washing machine is an example of centripetal force or the centrifugal. Answer is centrifugal force. Question next. Value of the Boltzmann constant in electron volt per Kelvin is 8.617 multiplied by 10 raised to the power minus 5. Name of the experiment used to establish the wave nature of the slow moving neutron? Answer is the Davison and Germer experiment. What is a polygon with 4 unequal sides? Answer is quadrilateral. What number does giga stands for? Answer is billion. What word describes a number system with a base of 2? Answer is binary. How many sided nonagon has? Answer is 9. The dihedral angle in the staggered conformation is answer is 60 degree. The monomeric unit is nylon 66 is hexamethylene diamine and the adipic acid. The same energy orbital of a subshell are called answer is degenerate orbitals. Phenol on reaction with aqueous bromine gives 2,4,6 tribromophenol. Which nucleophilic substitution reaction give the racemic mixture? Answer is SN1 reaction. The neutral divalent reaction intermediate is answer carbenes. The poisonous gas released produced in the chloroform bottle is phosgene, COCl2. That is the set number 6. Next, the set number 7. Name the physical quantity whose SI unit is coulomb per volt. Answer is capacitance. The wire inside the electric bulb is known as filament. What is the angle between the electric field and the dipole moment at an axial angle? Answer is 0. Horizontal acceleration of a projectile is 0 meter per second square. The largest prime number less than 20 is answer is 19. Angle equal to 90 degrees classified as right angle. What does 3 squared equals? Answer is 9. How many zeros are there in 1 billion? Answer is 9. The bond angle is in ammonia is 107 degree. The biological name of the human is Homo sapiens. The formula of the wood split is CH3OH. Name the amino acid. The type of amines produced by Gabriel Thalamide reaction? Answer is primary amine. Ethanamide on reaction with P2O5 gives the ethane nitrile. Element having the atomic number 72 is hafnium. Which part of the eye is responsible for eye color? That is the iris. Which is the largest gland in the adult human? Answer is the liver. That is the set number 7.
Next, set number 8. The shape of our Milky Way galaxy's answer is spiral. The sound cannot pass through, answer is vacuum. AC is converted to DC by a, answer is rectifier. What is the full form of AM? Regarding the radio broadcasting, answer is amplitude modulation. To an astronaut, the sky appears, answer is dark or the black. Salicylic acid on reaction with the zinc dust gives the answer is benzoic acid. The number of the orbitals in T2G, our answer is 3. Maximum number of the electron of the same spin in the pure orbital, answer is 1. Valence configuration of the palladium is answer 4D10. Lowest freezing point is called as answer is eutectic temperature. The longest bone in the human body is answer is femur. The dental formula of the human teeth is 2123. What is the next prime number after 7? Answer is 11. How many months take a century? Answer is 1200. How many sides are there in a decagon? Answer is 10. Who proposed 5 kingdom classification system? Answer is Whittaker. Where does transcription process takes place in the cell? Answer is the nucleus. Now I will share some important memories of the district level science quiz competition, starting from the registration process to the screening test followed by the quiz. The different pictures we have now. The registration process going on by our teachers. That is the registration process. These are the different students coming from the different colleges before the starting of the screening test. Now the instruction are given to the participants. What are the different rules for the competition? So that is the picture during the screening test. Team in charges are also been present there during the instruction time. That is the time of the seat question paper distribution. So that is the time when the participant, one team has 3 students. So these are the 3 students collectively which are solving the questions of the screening test. Teachers are continuously been taking round. All the teachers were present in the room where the screening test been carried out. Now that is the time for checking of the screening test questions. The screening test questions are checked in presence of all the team members, their teachers. टीचर्स को भी इनवाइट किया गया, वो भी इसी रूम में बैठ गए. साइमल्टेनियसली उनकी रिफ्रेशमेंट चली यहाँ पे, और रिफ्रेशमेंट के साथ साथ उनके क्वेश्चंस को चेक किया गया. नाउ द ऑडिटोरियम, जो टॉप 8 टीम्स की जो अनाउंसमेंट हुई, वो आर दी टॉप 8 टीम्स, वो
हमारे ऑडिटोरियम के अंदर की गई, कॉलेज ऑडिटोरियम के अंदर. सो दैट इज द पिक्चर ऑफ कॉलेज ऑडिटोरियम्स. इन द फ्रंट सीट्स the team in charges are there, following by the different team students, followed by the college students in the college auditorium. All the teachers of different departments are there. Instructions are again given to all the participants before the start of the oral science quiz competition. All are waiting there for the chief guest and the principal, Major Dinesh Saharan. So before the coming of the chief guest, the instruction are again being given to all the participants to keep patience for the announcement of the result. Who are the best 8 teams among the 22 teams? 22 teams ने जो participate किया था. So here is the our chief guest, that is the head and professor department of the physics, Dr. Rajesh Punia, with the principal, Major Dinesh Saran, vice principal, Dr. Indu Sapra, and the other colleagues. So that is the scene of college auditorium during the oral science quiz competition. So here the principal, the chief guest are going for the Ma Saraswati Puja. So here are our Pandit NRS Government College Rohtak disciplined students. Most of the students are in their lab coat. You can see in the white coats, that is the lab coat for the chemistry students. Here again our chief guest, principal, and the different staff members. Here is the welcome address by the principal to all the participant students for the chief guest. Here is also the quiz master, Dr. Parveen Goel. Principal is addressing to the chief guest, Rajesh Punia, in that picture. So that is the beautiful college auditorium, completely full with the students. Here is the Dr. Rajesh Punia, professor and head department of the physics, with a very smiling face, who give a very beautiful lecture to all the students, to inspire all the students. All are listening the main basic points which are being told by the Professor Dr. Rajesh Punia. Now the result being announced, and after announcing the result, the team code will be given from A to H to best 8 teams. These are the different team students ranging from team A to team H.
So these are the all 8 teams in between that final oral science quiz competition being held इन डिफरेंट राउंड्स. जो सारे राउंड थे वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कौन से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस उनके बीच पूछे गए थे. दैट हियर इज द क्विज मास्टर डॉक्टर प्रवीण गोयल, जिसकी प्रेजेंस में ये पूरा कंपटीशन किया गया था. सो दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चन जो देखो हमने अभी पहले भी आपको दिखाए थे, तो वही सेम क्वेश्चन आपको अब स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देंगे कुछ कुछ. ये स्कोर बोर्ड है यहाँ पे, जिसके ऊपर हमारे स्टूडेंट्स साथ के साथ टीम के स्कोर को लिखते हैं और पूरे स्पेक्टेटर्स सभी देख सकते हैं, और साइमल्टेनियसली हर राउंड के बाद जो स्कोर है उसको अनाउंस किया जाता है. उसके बाद जो हमारे चीफ गेस्ट थे उनको लव ऑफ टोकन दिया गया, रिस्पेक्ट ऑफ टोकन. ये रैपिड फायर राउंड लास्ट में हुआ था. ये फाइनल सेरेमनी जिसमें जो विनर स्टूडेंट्स थे उनको डिफरेंट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए. सो दीज आर द टीम ऑफ द फर्स्ट प्राइज विनर. सभी 8 टीम्स को साइमल्टेनियसली स्टेज के ऊपर से ही सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ताकि उनको रिस्पेक्ट दी जा सके सभी टीम मेंबर्स को. साथ के साथ जो टीम इंचार्ज थे हर कॉलेज के उनको भी इनवाइट किया गया स्टेज के ऊपर. सो दैट इज द फर्स्ट प्राइज विनर स्टूडेंट्स with the principal, vice principal, the team in charges. Now the second team जिनको second position मिली with the team in charges. Now the third position holder, fourth position holder. Now the fifth position holder, sixth position holder, seventh position holder. Now the eighth position holder. तो सभी 8 की टीम को वहां पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे स्टेज के ऊपर से, और जो बेस्ट 5 टीम्स थी उनके नाम आगे डीएसटी पंचकुला, एचएससी, एसआईटी पंचकुला को सेंड कर दिए गए, ताकि वो 5 जो बेस्ट टीम है वो फर्दर अब जोनल लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट करेंगी. आफ्टर द लास्ट द होल ऑफ द फंक्शन एंडेड विद द जन गण मन अधिनायक जय हो, नेशनल एंथम के साथ. सभी स्टूडेंट्स की प्रेजेंस में नेशनल एंथम के साथ प्रोग्राम एंड हुआ. So these are the all proceeding of the district level science quiz competition, जो कि 30 सितंबर 2022 को पंडित एनआरएस गवर्नमेंट कॉलेज में किया गया था. हमने आपके सामने सारे रूल्स, सारी रेगुलेशंस, सारी चीजें हमने शेयर की, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी, डिफरेंट मेमोरीज इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर भी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमने शेयर की. और इस पूरे इवेंट की अगर आपको वीडियो देखनी है, जो डिफरेंट वीडियोस हैं वो हम पहले ही आपके साथ शेयर कर चुके हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट मेमोरीज. सो थैंक यू.